Hello everyone. We'll be starting the class in another 5 to 7 minutes or so. We'll wait for some more people to join in. Good evening, sir. Good evening. Hello everyone. We'll be starting the lecture in another 5 minutes or so. We'll wait for some more people to join in. Hey everyone. We'll wait for 3 more minutes for some more people to join in, and then we'll start the lecture.
Hey everyone, we'll wait for 3 more minutes. Wait for some more people to join in, and then we'll start the lecture. Hey everyone, we'll start the lecture now. Just give me a moment to set some technical things up. कल हमने कुछ डिस्कस किया था कि आप सबको करप्शन के बारे में पढ़ के आना है। करप्शन के कॉजेज क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, क्या एंटी करप्शन फ्रेमवर्क है, किस किसने किया? यस सर। किसी ने पढ़ा है वो? हाँ ना, कुछ बता दो यार। अगेन ओके। यस सर। सो हैरिस हैज रिटन यस। और किसी ने नहीं पढ़ा यार? The purpose of giving you that exercise was to make sure that content की तरफ से आपको कोई कमी ना हो and you are able to answer in the class कि how to brainstorm and write an answer based on the knowledge already you have. तो अगर आपको नहीं करेंगे तो आप क्लास में नहीं लिख पाएंगे आंसर्स एंड देन आपको उससे बहुत लिमिटेड फायदा होगा, एज आई kept on repeating. देखते हैं, we'll discuss it in the class. पहले let us take up the first topic of our lecture. The first topic is 15th Finance Commission. सबसे पहले ये रिजॉल्व कर लेते हैं कि what is the utility of this. तो पहली यूटिलिटी है फॉर प्रीलिम्स के अंदर 15th फाइनेंस कमीशन की बहुत बारीक बारीक बातें हो सकती है. देयर कैन बी very minute facts which can be asked in prelims out of 15th finance commission. So through this lecture we will attempt to see कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखनी है और जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है. सेकेंडली, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन 15th फाइनेंस कमीशन इन मेंस, जिसमें आपको 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है. Such a question has already been asked on previous finance commission and this finance commission validity is still 2025. तो इन केस आपको आगे भी अटेम्प्ट्स देने पड़े
तो भी आपको ये डायरेक्टली मीन्स में काम आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी ना कभी आना ऑलमोस्ट अश्योर्ड है इसके ऊपर। एंड द थर्ड यूटिलिटी इज फॉर फॉर्डर पॉइंट्स इन वेरियस एरियाज। तीसरी चीज, जैसे फाइनेंस कमीशन हैज सेड समथिंग अबाउट हेल्थ, फाइनेंस कमीशन हैज सेड समथिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमने ये देखा है कि मेंस के आंसर में वी हैव टू कंबाइन द स्टैटिक पार्ट विद द डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट को हमें डायनेमिक पार्ट के साथ कंबाइन करना होता है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इन डायनेमिक पार्ट वी ट्राई टू इनकलकेट द करंट हैपनिंग्स which are taking place right now, and the best way to inculcate that current happening is uh, the best way to inculcate that current happening is to give recommendations from recent commissions। तो फाइनेंस कमीशन ने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कोई रिकमेंडेशन दी है और आप अगर उसे डिजास्टर मैनेजमेंट के वे फॉरवर्ड में लिखते हैं, यू विल गेट मोर मार्क्स एज कंपेयर टू अदर पीपल। किसी को कोई डाउट इसकी यूटिलिटी में? नो सर। इन जनरल किसी को लास्ट वीक के आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, आई एम सीइंग सम पीपल हु आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट वीक के न्यूज़पेपर से कोई डाउट हो या फिर करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कल जो हमने क्लास डिस्कस करी उससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को? बता दो यार, यस नो? नो सर, कल कर लिया था। Shrishti has asked sunset review. Shrishti, you'll have to tell me in what context are you asking me this question? जैसे sunset review किस context में पूछ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ा आपने, क्या क्वेश्चन था, क्या कंटेक्स्ट था? Sir, it was regarding the Chinese steel products like anti-dumping duty. So in that context, they asked like the government will do a sunset review. So I couldn't understand that part. Okay, Shrishti, can you mute yourself? There's too much disturbance at your end. Okay. So in general, there is something called as sunset clause in schemes. Sunset clause क्या होता है? Does anybody have any idea about it? So the government gives incentives to a firm up to a certain period only, and then all the incentives are removed if the firm does not meet certain criteria. What you are telling me is a specialized definition of sunset clause. Sunset clause is a much more generic statement. Sunset clause refers to a provision which will be removed after a certain period of time. For example, मान लो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, so in that scheme it's not written till when will that scheme be functional. Generally पुरानी schemes में क्या होता था, what used to happen in earlier schemes was that they were started but they did not contain any date by which they will be automatically scrapped unless they are extended. Now the schemes have started coming with a sunset clause. What does sunset clause means? After that date, which is mentioned in the sunset clause, the scheme will stop functioning automatically. ऐसा नहीं होगा कि सरकार को बंद करनी पड़ेगी. Why is sunset clause very important? Because politically it's very difficult for a government to close down a welfare scheme. For example, अभी मनरेगा है, मान लो India gets developed after 10 years and there's no need for Manrega anymore. But still government will not be able to close Manrega due to political pressure. But if there is a sunset clause in Manrega, then after 10 years, Manrega will automatically get scrapped unless extended for more years. So this is sunset clause. When the author of that article is talking about sunset review of some duty, that means that that duty is imposed right now. बट ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक इम्पोज होती रहेगी. आफ्टर द पीरियड विच इज गिवन इन सनसेट क्लॉज दैट ड्यूटी विल ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड. समझ में आया आपको? Shrishti, were you able to understand? Okay. Shrishti has typed yes in the chat. So is there anybody else who was not able to understand anything or has any doubt in last week's lecture or related to last week's current affairs or prelims or means? There's no answer, so I'm hoping there's no doubt.
Just give me a second. I'll message in the group. So let's now start with the first discussion that we have to take today. It will take longer time than usual because we'll be discussing this very comprehensively, and it's required key as usual you interrupt me in between and ask any doubt that you might have. Why? Because 15th Finance Commission is a very important and technical topic, and you will come across it many times. तो अगर आप fragmented way में पढ़ोगे आपको समझ काम आएगा, एंड अगर समझ में कम आता है तो फिर आप उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मुझे तुरंत रोक के पूछ लेना ताकि वो डाउट रिजॉल्व हो जाए. पहली चीज, व्हेन वी सेड we'll discuss a topic of paper 2, we said we'll discuss what are the articles related to it. तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, अंडर विच आर्टिकल इज फाइनेंस कमीशन सेटअप? 280. Pardon, Rishit, what are you saying? 280. Yes. So Finance Commission is set up under Article 280 of the Constitution. What is Finance Commission? Finance Commission is a body which gives principle of vertical and horizontal devolution of taxes. ठीक है? Of divisible pool of taxes. तो जो total taxes होते हैं उसमें एक divisible pool होता है which contains of some taxes. उस taxes को कैसे divide करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका काम फाइनेंस कमीशन का है. Let us study the formal responsibilities of Finance Commission now. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इवेल्युएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसेस किस हालत में है. फॉर एग्जांपल उनका फिस्कल डेफिसिट कितना है, उनका एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं, उनके बाकी मैक्रो इकोनॉमिक क्राइटेरियाज कितने हैं, ताकि उनके स्टेट ऑफ फाइनेंसेस पता लग सके. सेकेंड इज रिकमेंडिंग द शेयर ऑफ टैक्सेस which is vertical and horizontal devolution of taxes. Third is laying down the principles determining tax distribution. ठीक है, कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रिंसिपल पे डिटरमाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि विम्सिकली बोल दिया फाइनेंस कमीशन ने कि 20-80 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इट हैज टू गिव दैट प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे हम टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. ठीक है, एनी डाउट बताओ यार. Sir, any examples of such principles? We'll discuss it in the lecture itself shortly. तो कौन से principles हैं वो हम आगे देखेंगे. Now these are the general responsibilities of Finance Commission. These are the general responsibilities of Finance Commission. With each Finance Commission, Center can provide some terms of reference. What are the terms of reference? Terms of reference वो matters हैं. These are those matters on which Center has said that Finance Commission should look into them. कि Center ने कहा है कि Finance Commission को इन बातों पर देखना है कि इन बातों पर Finance Commission क्या recommendation कर सकता है. So each Finance Commission, the terms of reference are somewhat important and you should briefly know or briefly have a rough idea कि क्या क्या थे. उन्हें exactly याद नहीं करना है पर थोड़ा सा rough idea होना चाहिए. तो terms of reference क्या है इस Finance Commission के? First was effort made in expansion of tax net. कि स्टेट कितना एफर्ट डाल रहे हैं टैक्स नेट एक्सपेंशन में, उसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. ये था हमारा फर्स्ट टीओआर. द सेकंड टीओआर वाज एफर्ट्स मेड इन अचीविंग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं स्टेट. दैट वाज द सेकंड टर्म ऑफ रेफरेंस, अचीविंग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. द थर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस वाज कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स. कि पॉपुलिस्ट मेजर पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे कंट्रोल करना. द फोर्थ टीओआर वाज बिहेवियरल चेंज टू एंड ओपन डेफिकेशन. कि क्या बिहेवियरल चेंज है टू एंड ओपन डेफिकेशन. ठीक है, ये चार टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो मेजर हैं वो दिए गए हैं. ड्यू टू दिस देयर वाज सम कंट्रोवर्सी एज वेल. कैन एनीबॉडी गिव अ ब्रीफ आइडिया व्हाट द कंट्रोवर्सी वाज? In terms of reference की वजह से there was some controversy which was in newspaper too many times. तो क्या थी वो controversy?
कोई आइडिया दे सकता है? Can I? Yes. So previously 14 Finance Commission took 1971 population. It gave a greater share, but this commission removed that completely and it gave weightage to 2001 population, 2011 population. उससे क्या So, होगा? so the southern states have made a lot of efforts in reducing the population in these 40 years. So they have been on a disadvantage in terms of share because of this new criteria. So the government took action of giving 12.5% to this demographic performance. Was So there any other controversy as well? yes. What was that? Wait, sir, let me think. So state was asking for more tax. वो तो हमेशा ही होता है कि जैसे मुझे अगर पैसे देने हैं तो जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगेगा और मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम पैसे दूं. तो दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी, दैट्स इन ऑलवेज. कभी भी कोई भी स्टेट या एंटिटी ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं हमें पैसे मत दो, राइट? और क्या है इशू? Sir, because of GST implementation, sir, manufacturing states they have complained like they will be losing the amount of tax. That's because it is a destination based. Yes, but that was a controversy long back regarding GST implementation. I am saying, is there any controversy regarding terms of reference of this finance commission? So was it related to that defense on which state had a pressure? Yes. There was. Can you expand on that? Sir, I don't remember. It was like some fund was set up for defense, and So one of the terms of defense was also that should there be a capital fund set up for defense purposes. For defense, yes, sir. So the state saw it as an attempt to decrease their share through a backdoor, because currently defense comes under center list and all the funds allocated to defense comes from center's share. So अगर finance commission इसमें look in करेगा, इसका मतलब states will have to contribute to the defense expenditure, which means less effective revenue will come to states. So that was the second controversy. The third controversy was this term of reference, efforts made in expanding of tax net. So the state said that it is state prerogative whether state makes that effort or not, and when finance commission makes that as a criteria, then it can lead to tax terrorism by the state. कि जितने ज्यादा state tax revenue लेके आएगा tax terrorism कर करके, उतना ज्यादा उसे और एक्स्ट्रा उतना ज्यादा उसे और एक्स्ट्रा फाइनेंस कमीशन की तरफ से डिवॉल्व फंड मिलेगा. सो दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग. देन efforts made in achieving replacement level of population growth, as Rishit very rightly said, this was included to address the state's fear when the center took 2011 population as a criteria. Then controlling expenditure on populist measure, state said that it's a part of their own fiscal policy whether they use a populist measure or not, and this should not come under finance commission. This is against the spirit of cooperative federalism. कोई बता सकता है कि ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंडर क्यों के अगेंस्ट क्यों है? How is the third term of reference against the spirit of cooperative federalism? So most of the schemes are central sponsored, and if states have to contribute to it, that will affect their finance, perhaps. No, that is not the reason. The reason is कि populist measure can be defined by anybody as anything. अगर you are giving people food grains for free, I might term as populist measure, but you might term it as welfare measure. तो state कह रहा है कि when we have the funds, then it is untied funds from finance commission. How we use those funds are our prerogative. कि मैं कैसे पैसे अपने खर्च कर रहा हूँ वो मेरा prerogative है, and you should not come into state's fiscal measures or fiscal capacity
and that is interfering in the state framework, state finances के अंदर आप interfere कर रहे हो. That is why it is against the spirit of cooperative federalism. समझ में आया? Are you able to understand? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now there are some general issues with respect to Finance Commission. Can anybody give me some idea कि क्या issues है Finance Commission को लेके? So it is not a permanent body and it is set up once in 5 years. First is not a permanent body. So no permanent staff or resources. और कुछ? बताइए. There is one in comment. The second is yes. Lavanya has said in chat that it is an advisory body. So yes, although its recommendations are not necessarily rejected, but still this is a drawback that it is an advisory body. The third issue Neha has said is lack of infrastructure. So lack of infrastructure, you have to be much more specific if you give that point. Infrastructure in terms of what? So maybe we can say that it has lack of support staff. Inadequate support staff can be one point, but that will be a tertiary point because that is very generic in nature. Is there any other point? कोई और point किसी को लग रहा है? फाइनेंस कमीशन और फेडरलिज्म के हिसाब से सोचो, स्टेट और फाइनेंस कमीशन के हिसाब से. States share or states representation is not The adequate. lack of coordination between state and center. Between state and what? Union. Sir, there is no member from the state who belongs to the Finance Commission, but while taking the decision, it is taken on the states. Very good, Jenna. So this is a very important drawback. It does not have any representation from the states, whereas its decisions reflect the interest of the state. तो उसके decision interest of state को affect कर रहे हैं, पर state से कोई representation नहीं है. Does not have state representation. So adding to the third point, the terms of reference are also set by the center. Very good. So that is another very important drawback. The terms of reference are also set by the center. Is there any other drawback related to the third and fourth point only? So there is a message in chat box. Okay. Transparency Basis issues. of allocation of resources is not clear. Transparency issues. To some extent, we can say that, Shrishti, because the Finance Commission obviously does not explain why it has made some criteria, but that will again be a tertiary point. Another point is membership of Finance Commission. States do not have any say in the membership of Finance Commission as well. So membership में states का say नहीं होता है. Okay, so these are some issues with Finance Commission. Why we have talked about these issues is this can come as a question in means federalism आपका एक GS2 पेपर में टॉपिक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इश्यूज इन फिस्कल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेंटर और स्टेट के बीच में फिस्कल इश्यूज के अंदर क्या रिलेशन है, उसमें दिस विल कम, दीज पॉइंट्स विल कम कि फाइनेंस कमीशन इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ फिस्कल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और उसके अंदर ये सब इश्यूज आते हैं, राइट? Right. ओके. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इन सब पॉइंट्स में? No, sir. So Shrishti has asked me to repeat the end part. So the last part we have talked about membership, that the membership of science of the Finance Commission, state have no
say in the membership of the finance commission also. तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फाइनेंस कमीशन का कि फाइनेंस कमीशंस डिसीजन अफेक्ट द स्टेट फाइनेंसेस, बट स्टेट के पास कोई से नहीं होता मेंबरशिप ऑफ फाइनेंस कमीशन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब. Let us come back to terms of reference. We have discussed the terms of reference already. I hope the terms of reference are clear to you. Let us. Sir, I have a question. बोलो. सर, हमने इश्यूज डिस्कस किया, तो इसके लिए रिकमेंडेशंस कोई ऐसी कमेटी बैठी हो जिसको सही करने के लिए हो? रिकमेंडेशन आप ही बताओगे. इश्यूज डिस्कस कर लिए तो इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी? नो सर, कोई कमेटी ऐसी है जो बैठी हो? कमेटी ऐसी कोई नहीं बैठी है. अगर बैठी है तो मुझे नहीं पता है, पर क्वेश्चन ये नहीं आता है कि कमेटी कौन सी बैठी है या नहीं बैठी. कमेटी विल एक्ट ओनली एज अ वैल्यू एड. the way forward part you can write on your own as well. तो इसमें way forward हम क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या मुझे? First of all, increasing the stake of states representation. इंक्रीज तो हम तब करेंगे ना जब हो इनिशियली. अभी तो है ही नहीं. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी representation of states in finance commission, right? Right. Yes. Shrishti has given a recommendation in chat that greater consultation from state while setting the terms of reference of finance commission, which is a very good recommendation. Basically recommendation कैसे लिखनी है आपको? इशू लिखा, उस इशू को एड्रेस कर दिया. ठीक है. Rishit was saying something. Making it a permanent body, because it is in 5 years so many situations changed, like COVID came, so it should be having the power to change the revolution at any point of. Yes, so that can also be one recommendation, that making finance commission as a permanent body. तो ये भी एक recommendation हो सकता है. तो as we have discussed in earlier lectures, आपको recommendations कैसे लिखने हैं? पहले issues को लिखना है और फिर उन्हें address करना है. तो वो आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी. इट विल बी अ वैल्यू एड इफ यू नो सम नेम ऑफ कमिटी और सम कमीशन जिसने सिमिलर रिकमेंडेशंस दिए हो, यू कैन यूज दैट नेम एज वेल. ठीक है. नाउ इज देयर एनी अदर डाउट? No sir. आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस go through the recommendation part. The recommendation part is very important. Question can be asked in prelims as well. Question can be asked in mains as well. And even if no question is asked on it, then also you can use these recommendations in your exams as fodder points. How to use them we will see ahead in our lecture. So isko hame dhyan se dekhna hai. The first thing was vertical devolution and the second thing was horizontal devolution. So we discussed briefly what is vertical devolution and what is horizontal devolution. Can anybody tell me क्या होती है ये terms? Can I? Yeah. So vertical is from union to state and horizontal is between states. Yes, very good, Rishit. And Shrishti has also written the same in chat, that vertical devolution refers to devolution from central to states. जो central state को पैसा देता है वो होता है vertical devolution. Horizontal devolution is the split of funds between the states themselves. कि states कितना पैसा आपस में बांट रहे हैं, that is horizontal devolution. तो वर्टिकल डेवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन ने कितना दिया? 15th 41%. पिछले फाइनेंस कमीशन ने कितना दिया था? 14th फाइनेंस कमीशन ने 42. और 13th फाइनेंस कमीशन ने कितना दिया था? 32. वेरी गुड. सो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में बढ़ रहा है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है या घट रहा है, सो दिस कैन act as a fodder point that you can show कि अलग-अलग फाइनेंस कमीशंस की रिकमेंडेशन का ग्राफ बना के कि पहले 32% था, फिर 42% था, और सिर्फ फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन में जम्मू एंड कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी ऐड होने की वजह से 41% हुआ है. नहीं तो इफेक्टिवली स्टेट्स का शेयर ऑलमोस्ट उतना ही है. देयरफॉर देयर इज स्टिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. यस सर. आपको इस लेक्चर में से डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो एड्रेस करना ही है. साथ में आपको ये देखना है कि इस नॉलेज को आप कैसे यूज करोगे. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विस एग्जाम. कि ऐसा नहीं कि आपने 100 चीजें पढ़ ली, जो नॉलेज आप पढ़ रहे हो उसे आप 10 जगह पे कैसे यूज करोगे वो समझना है आपको. जैसे यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस आएंगे
डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ टॉपिक इन सिविल सर्विस और हर साल क्वेश्चन आते हैं उस पर 2 से 3। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए आपको फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लिख देनी है। वो रिकमेंडेशन रिसेंट भी हुई, वो रिकमेंडेशन अच्छी भी हुई और आपके आंसर में वैल्यू भी ऐड हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस लेक्चर एंड दिस इज व्हाई दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन as we said is upon some criteria. We talked here about laying down principles determining tax distribution. तो principles क्या क्या है? 14th Finance Commission gave these principles. 14th Finance Commission ने क्या क्या principle दिए थे? Income tax, income distance पे 50%. What is income distance? Can anybody tell me? Sir, it is the distance between the highest income of the state and the lowest income state. Yes. Between the highest income and the lowest income of that state itself? No, sir. Then what? The highest minus the difference between the state who has the highest income and the state who has the lowest income. It is Yes. a different two different states. Yes, very good, Jana. So income distance refers to the income of the highest earning state minus the income of the state for which we are considering the revenue devolution. जैसे कि मैं मान लो झारखंड को कितना पैसा देना है वो देख रहा हूँ, तो मैं झारखंड का इनकम देखूंगा एवरेज, और से हरियाणा मान लो सबसे हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट है, तो हरियाणा का इनकम देखूंगा, हरियाणा माइनस झारखंड जितना होगा उसके हिसाब से झारखंड को दूंगा। अगर झारखंड का रेवेन्यू बहुत कम है तो झारखंड को ज्यादा पैसा मिलेगा, झारखंड का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो झारखंड को कम पैसा मिलेगा। तो जितना गरीब स्टेट है, द पुअरर द स्टेट इज, द मोर रेवेन्यू इट विल गेट। दैट इज टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या? यस Yes, आगे बढ़ते हैं। Yes. आगे बढ़ते हैं। द सेकंड पॉइंट वाज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। सो फाइनेंस कमीशन हैज सेड दैट फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी फर्स्टली एक्ट्स एज अ रिसोर्स इन इटसेल्फ, तो उसके लिए हमें स्टेट को रिवॉर्ड करना चाहिए। सेकेंडली इट हैज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जब कोई स्टेट फॉरेस्ट और इकोलॉजी को कंजर्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने माइनिंग राइट्स, वो अपनी इकोनॉमी को बैकफुट पे ला रहा है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट स्टेट conserve their forest and ecology, and that is why the Finance Commission has put a share of 7.5% towards forest and ecology, and that share has increased as well. 7.5% से अगर आप अभी देखो 10% हो गया। That shows the increased importance given to environment, and that can act as another fodder point in your answer. Environment का कोई क्वेश्चन है कि environment पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, environment conservation के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, या गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, हाउ कमिटेड द गवर्नमेंट इज टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन, देन यू कैन यूज दिस एज अ फर्दर पॉइंट दैट फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का शेयर 7.5% से 10% हो गया। दिस शोज कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। समझ में आया आपको? यस yes, sir. आगे बढ़ते हैं। द थर्ड point on which devolution is decided is area. Area जिसका जितना ज्यादा है उसे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, which makes sense as well. The fourth issue which is deciding how much revenue each state will get is its population. So the earlier the population ratio was 27.5%. Its weightage was 27.5% in overall devolution. Now its weightage has been decreased to 15%. ऐसा क्यों हुआ है? कोई बता सकता है क्या? 27.5 से 15% क्यों कर दिया हमने? बोलो यार, यस नो, कोई कुछ बोलो। So because demographic performance is given 12.5, and before Yes. it was 1971 and 2011 both. This time it's only 2011. So why was it 1971 earlier? So because we didn't have delimitation. That is not the correct reason, Rishit. और किसी के पास कोई रीजन? Why was 1971 population data included in 14th Finance Commission recommendation?
Lavanya has said family planning program, which is the correct reason. कि पहले 1971 का डेटा हमने इसलिए इंक्लूड किया था. Suppose we include the latest population data, which is 2011 population data. That means in 2011, the state which has more population, it will get more money. That means the states which had successfully controlled their population, they will get less money. But this becomes counterintuitive. Why? Because ideally the states with better performance should get better money, right? जिस स्टेट ने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसे उतना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, but that is not the case. That is why 14th Finance Commission, it put population as 27.5% and it put population of 1971. पर इसी के साथ the counter point is कि the states which have more population, they need more money to ensure that they are well developed. The states such as उत्तर प्रदेश और बिहार, they have much more population. उनको अगर हम ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो वो अभी की तरह उतने ही पिछड़े रह जाएंगे, राइट? तो हमने क्या किया, we have to strike a balance between the two. So we introduced population as 15% and we put it as 2011 census. So population is 15% as per 2011 census, and we introduced another criteria which is demographic performance, which has separate weightage of 12.5%. ऐसा नहीं कि हमने सारा का सारा 27.5% 1971 के बेसिस पे दे दिया, या ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा 27.5% हमने 2011 सेंसस पे दे दिया. अगर सारा का सारा, if the whole 27.5% we would have given on the basis of 1971 census, then it would have been against the northern states. If the whole of it would have been given on the basis of 1971 census, then it would on the basis of 2011 census, then it would have been against the southern states. So we have to strike a balance. इसीलिए हमने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% दिया. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस will favor the southern states and population will favor the northern states. Therefore we have strike a balance. समझ में आया सबको? Yes sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The last point on which the revenue is shared is tax effort, which was a bone of contention. हमने ऊपर देखा था terms of reference में, effort made in expansion of tax net. This is the tax effort here. So government ने 2.5% share tax effort को दिया है. So what is the issue here? States are fearing, firstly different state have different tax capability. So महाराष्ट्र के पास already tax बहुत ज्यादा आएगा. So will Maharashtra be ranked above in tax effort or not? No state knows that. And the second issue is tax effort के साथ साथ it can make states competitive in the sense कि हर स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव रेस हो सकती है कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की, एंड दिस कैन लीड टू टैक्स टेररिज्म. समझ में आया सबको? Yes. आगे Tax terrorism. Could you please explain again? कोई बता सकता है कि यार टैक्स टेररिज्म क्या होता है? So when states collect taxes बताओ बताओ. स्टेट टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स टेररिज्म कहते हैं? No sir, I'm not getting the actual word. So when state keep on increasing tax revenue through increase of taxes. Progressive taxes. When states collect progressive taxes which burden consumers too much. No, that is not correct answer. Lavanya has written expenditure on tax collection. That is also not correct. Tax terrorism refers to harassing of taxpayers, कि taxpayers को harass कर रहे हैं अगर revenue officials to meet the taxation targets. हर IRS officer को taxation targets मिलते हैं. मान लो आप select हो जाते हो और आपको taxation target मिलेगा 1000 करोड़ का, तो मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 करोड़ बहुत आराम से कलेक्ट हो जाते हैं. पर अब टैक्स एफर्ट का फाइनेंस कमीशन का एक पॉइंटर है. सो नेक्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ 1000 करोड़ योर टारगेट इज 10,000 करोड़. तो ऐसा तो है नहीं कि 10,000 करोड़ आप टैक्स इवेजन को डिटेक्ट कर करके ले आओगे. तो आप क्या करोगे, जो टैक्स नहीं भी दे रहा और जो लीगली टैक्स नहीं दे रहा, जिसका कोई टैक्स नहीं बन रहा है, उसको भी आप हैरेस करना शुरू कर दोगे. रेगुलर रेड्स हुआ करेंगी. तो दिस इज नोन एज टैक्स टेररिज्म. कि व्हेन the tax official, they start harassing the taxpayers or the citizens to meet their taxation targets. ठीक है, समझ आया क्या ये?
Yes, sir. ठीक Yes, है. The point of making sure that you understand these things are ऐसी छोटी छोटी चीजों पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करोगे तो आपको एग्जाम के टाइम तक याद नहीं रहेगा. So that is why I have told you before also that make sure that you are attentive in the lecture, you participate in the lecture, and the third thing is you let me know if you don't understand any term. ठीक है. फिर the next point which we have to study is what are the grants recommended by the finance commission. कि फाइनेंस कमीशन ने कौन से ग्रांट्स रिकमेंड किए हैं इस डिविजिबल पूल के शेयर के अलावा. ये डिविजिबल पूल का शेयर इस फॉर्मूला के हिसाब से हर स्टेट को मिलेगा. उसके अलावा द सेंटर गिव्स सम ग्रांट्स टू सम स्पेसिफिक स्टेट्स एज वेल. सो व्हाट आर दीज ग्रांट्स दैट वी विल स्टडी राइट नाउ. द फर्स्ट ऑफ दीज ग्रांट्स इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, कोई बता सकता है क्या मुझे? बोलो यार. हाँ ना. We have The already amount paid to fulfill the revenue deficit. What is revenue deficit? हमने ये सब बजट की क्लास में डिस्कस कर लिया है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. वेरी गुड. सो स्टेट्स का जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है दैट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स सेंटर टू ब्रिज दैट रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू ग्रांट्स टू स्टेट. तो 15 to 17 states it has granted money worth 2.9 lakh crore. ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी है, बस एक बार पढ़ लो और that is enough. इतनी चीजें नोटिस कर सकते हो कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट has not been recommended for all state. हर स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ 17 स्टेट्स के लिए है. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हर स्टेट के लिए है या नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रीलिम्स में कि 17 स्टेट्स के हैं या 19 स्टेट्स के हैं. These kind of questions will not come in prelims. ठीक है. The only thing which you have to remember here is that revenue deficit grants are not for all states. किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ ना बोल दो यार कुछ. सर किसी के स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट सेंटर क्यों कवर करेगी? बताओ यार क्यों कवर करेगी स्टेट के रेवेन्यू डेफिसिट को सेंटर? कोई बता सकता है? Sir, it shows the federal characteristic of our country. और कुछ? अगर मान लो सेंटर कवर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? मान लो स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है और उसे सेंटर कवर नहीं कर रहा तो क्या होगा? Then, sir, the weaker state will become more weaker. What will It become will not more? have any option to. Sir, there will be no option to upgrade itself because it is already struggling with some financial issues. So any kind of support is needed from outer side. So your answer is partially right. Revenue deficit क्या होता है? Revenue expenditure is generally committed expenditure. कि आपको वो एक्सपेंडिचर करना ही है, आप उस एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते. जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया पेंशन. तो किसी स्टेट का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, फर्स्टली द स्टेट कांट बोरो विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर. स्टेट सेंटर की परमिशन के बिना बोरो नहीं कर सकता है. ठीक है. तो अगर सेंटर अलाउ नहीं कर रहा है स्टेट को कि सेंटर स्टेट को पैसे भी नहीं दे रहा है और बाहर से स्टेट बोरो नहीं कर पा रहा है, तो फिर स्टेट के फाइनेंसेस वैसे ही नहीं बचेंगे एंड दैट विल अफेक्ट द फेडरल फाइनेंस आल्सो. ठीक है. दूसरा कि इट इज टू सपोर्ट द वीकर स्टेट्स एज लवन्या सेड. एंड thirdly स्टेट्स खुद से बाहर से अगर लोन लेने लग जाएंगे इट विल लीड टू इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग. क्यों? क्योंकि स्टेट जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी लोन लेते रहेंगे और इनडिस्क्रिमिनेटली स्पेंड करने लगेंगे और इवेंचुअली वो लोन डिफॉल्ट होगा और इंडिया की ही बदनामी होगी. ऐसा नहीं है कि कोई वेस्ट बंगाल को या केरला को या मध्य प्रदेश को लोन दे रहे हैं, सब लोग इंडिया को ही लोन दे रहे हैं. तो इवेंचुअली फेडरल गवर्नमेंट इज द गारंटियर ऑफ ऑल लोन्स. तो इसके लिए सेंटर स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देता है. ठीक है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर जैसे कोई स्टेट जापान से या फिर कहीं से मनी बोरो करती है तो सर वो किसकी डेप्ट में जाता है, स्टेट के या सेंटर के? सर दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन. वो उस एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो जनरली वो स्टेट के डेट में जाता है
but the agreement says that the center debt will be counted against center debt, then वो center के debt में भी जा सकता है firstly, and secondly even if that goes in state debt, still federal government is the ultimate guarantor of all loans. तो अगर state government किसी रीजन से उस पर default करती है तो central government ही eventually उसे pay back करती है, right? Did you understand? Yes sir. आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ते हैं. So the first grant is revenue deficit grant. I hope you understand now why revenue deficit grants are given. The second grant is sector specific grant. तो 1.3 lakh करोड़ का sector specific grant दिया है 8 sectors के लिए. What are these 8 sectors? The first sector is health. The second sector is school education. The third sector is agri reform implementation. The fourth sector is maintenance of PMGSY roads. Fifth is judiciary. Sixth is statistics. And seventh is aspirational district and blocks. ठीक है? Health, school education, higher education, agri reform implementation, maintenance of road, judiciary, statistics, aspirational districts. ये सब चीजों के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दिए गए हैं. अभी आपको यूज कैसे करना है? जैसे एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप एक गवर्नमेंट स्टेप लिख सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रांट भी दिया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए. या जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन है तो जुडिशियल डिले का कोई क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट होता है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उस पॉइंट के सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने जुडिशरी के लिए ग्रांट्स दिए हैं, वो हम यूज कर सकते हैं. समझे? कोई डाउट? यस किसी का कोई डाउट? सर, ये जुडिशरी के लिए जो ग्रांट है ये अलग से है जो एक्ट्स के तहत आता है? ग्रांट्स और जो सेंटर और स्टेट के बीच में डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स है दैट इज डिफरेंट. डेवोल्यूशन ऑफ फंड कैन बी थ्रू 2 मेथड्स. वन इज ग्रांट. ग्रांट मतलब मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको पैसे देने की, पर मैं दे रहा हूँ, दैट इज ग्रांट. द सेंटर माइट नॉट गिव ग्रांट एज वेल. एंड द सेकंड इज द डेवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो जो फंड है डेवोल्यूशन के थ्रू वो स्टेट्स का हक है, दैट सेंटर कैन नॉट स्टॉप. ठीक है? सो दिस डेवोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम दीज ग्रांट्स. ठीक है? ये तो अलग चीज है. कोई डाउट किसी को? हेलो Sir, which fund is related with this allocation? Consolidated fund, right? कंसोलिडेटेड फंड से आता है ये सारा एलोकेशन. यस. Okay, sir. 3 फंड कौन से थे हमारे? The consolidated contingency and public account. पब्लिक अकाउंट वाला फंड किस चीज के लिए होता है? We have discussed all of this in budget class. So I hope you are listening in the budget class. बताओ यार. Basically, it's not government's money. The government just stores the money of people, and it's a liability government keeps in this account. Basically, what I told you was when the government acts as a banker, that money is stored in public account. तो public account का कोई भी money इन सब पर्पसेस के लिए नहीं आएगा. This is the government function. तो government function में बैंक का क्या रिलेशन? When the government acts as a banker, that money is in public account. तो contingency fund से तो वैसे भी ये सब पैसा आ नहीं सकता है. Why? क्योंकि ये किसी contingency के लिए नहीं है. Public account से वैसे भी ये पैसा आ नहीं सकता है. ठीक है? तो ये किस हिसाब से आता है? ये सिर्फ contingency ये सिर्फ consolidated fund से आता है. किसी को कोई डाउट? बोलो यार हाँ या ना. No, sir. Why we are discussing this in this detail is कि आपको ऐसे डाउट्स एग्जाम में भी आएंगे. आपको खुद से पता चलना चाहिए कि ये डाउट्स कैसे सॉल्व करने हैं. एग्जाम में आई वोंट बी विद यू, राइट? प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ गया कि फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन कौन से फंड से होती है, तो आपको खुद से सोचना है कि अच्छा इन 2 फंड से तो हो ही नहीं सकती, तो तीसरे से ही होती होगी. ऐसे सोच के यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी एज वेल. आगे बढ़ते हैं. इज देयर एनी डाउट इन द होल लेक्चर टिल नाउ एनीवेयर?
सर मैंने पढ़ा था पावर सेक्टर के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। आगे चलेंगे, सब आएगा, चिंता मत करो। क्लास खत्म हो जाएगी जब मैं बोलूंगा कि हाँ 15 फाइनेंस कमीशन हमने खत्म कर लिया, तो आप पूछ सकते हो कि सर मैंने ये पढ़ा था, ये तो आया ही नहीं। We are not even halfway through it. कोई और डाउट? हेलो Sir, there are only 17 states to which revenue deficit grant has been given. Does it mean the rest of the states are not in deficit? Yes, that means the rest of the states do not have any revenue deficit, and hence revenue deficit grant has not been given to them. किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट? दो सर। आगे बढ़ते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल टॉपिक, एंड अधिकतर जगह पे इट वोंट बी डिस्कस्ड इन अ कंसोलिडेटेड मैनर। तो जब ये डिस्कस हो रहा है तो डाउट्स पूछ लेना अपने, नहीं तो आर्टिकल पढ़ोगे उसमें डाउट बताने वाला नहीं होगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ग्रांट इज स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। सो टू सम स्पेसिफिक स्टेट्स गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स इन सम एरियाज. What are these areas? For social need, for administrative governance and infrastructure, for water and sanitation, for preservation of cultural and historical monuments, and for high cost of physical infrastructure and tourism. इन पर्पस के लिए किसी किसी स्टेट को गवर्नमेंट ने स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट दिया है। ये हर स्टेट को नहीं दिया और ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन है कि सोशल नीड्स के लिए किसी स्टेट को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के लिए ज्यादा दे दिया, किसी स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा दे दिया, अकॉर्डिंग टू द स्टेट स्पेशल नीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There is a high level committee at state level which will review and monitor utilization of these grants. कि state specific और sector specific जो grants थे, sector specific grants कौन से थे? वो सारे states को मिलेंगे इन 8 सेक्टर के लिए। ठीक है, state specific grants कौन से थे? तो कुछ states को मिलेंगे इन सेक्टर्स के लिए। तो इन सेक्टर्स की स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, पर इन पैसे की यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। टू डिसाइड ऑन दैट अ हाई लेवल कमिटी विल बी सेट अप एट स्टेट लेवल। ठीक है, बढ़े आगे? Yes, sir. यस सर। सर ये हाई लेवल कमेटी कौन सेटअप करेगी? यार स्टेट लेवल पे है तो सेंटर सेटअप करता होगा स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट खुद सेट करेगा तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मुझे भी पता नहीं है कौन सेटअप करेगा, पर आई एम अज्यूमिंग कि सेंटर ही करेगा। अगर स्टेट खुद ही सेटअप करेगा अपनी ही यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं हुआ? होगा। तो फिर स्टेट नहीं करेगा सेटअप। जब कुछ ना बताओ तो द बेस्ट वे इज टू अज्यूम द मोस्ट लॉजिकल थिंग। ठीक है, और वैसे इतनी डीप में को भी आएगा भी नहीं। कोई डाउट बताओ यार, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। तो व्हाट फाइनेंस कमीशन सॉ वाज दिस इज ग्रांट्स टू स्टेट, बट द स्टेट इज यूटिलाइजिंग ऑल दिस ग्रांट। स्टेट खुद ही के पास पैसा रख रहा है सारा का सारा, एंड स्टेट इज नॉट डिवॉल्विंग दिस टू द लोकल बॉडीज इटसेल्फ। So from the previous finance commission, there became a new practice to give grants to local bodies as well. कि center directly state को bypass करके local bodies को भी grant दिया करेगा। What is the amount of this grant? This amount is 4.36 lakh crore. 4.36 lakh crore का grant दिया जाएगा। Should you is it required to remember this number? No, it is not required. Should you remember this number? Yes, you should remember this number. Why? Every year there is a question और पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। हर साल एक क्वेश्चन आता है पंचायती राज पर और अर्बन लोकल बॉडीज पर। उस क्वेश्चन में आपको ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज लिख सकते हो आप कि 4.36 लाख करोड़ दिया जा रहा है, एंड दिस रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स व्हिच द लोकल बॉडीज आर फेसिंग। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में बहुत यूनिक फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस लेक्चर से। आपको ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि you are able to identify those fodder points, you are able to remember them, and you are able to write them in the specific question when they are asked. Any doubt? No, sir. देख लेते हैं। This 4.36 lakh crore, how will it be divided? This will be divided into two parts.
2.41 lakh crore, 2.4 lakh crore to rural local bodies and 1.2 lakh crore to urban local bodies. ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज के ज्यादा, अर्बन लोकल बॉडीज के कम, ऐसा क्यों? Because most of the developmental needs are required in rural areas. This is correct. There is one other reason. What is that? The population. Very good. 70% of the population still resides in rural areas. तो rural areas को ज्यादा grant मिलेगा. ठीक है. There is 70,000 crore special grant for health infrastructure through local government. कि local government को directly 70,000 crore अलग से दिए health infrastructure को improve करने के लिए. This is a very important point that you have to mention in local body first. Why? Because it is showing the importance of local government. The second place where you have to mention this is in a question on health. Health पे जब भी question आएगा तो उसको आपको ये फिगर कोट करना है कि 70,000 करोड़ रुपए 15th फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं लोकल बॉडीज को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली. ये जो पैसा दिया है या ये जो पैसा दिया है ये जनरल है, इसको लोकल बॉडीज किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती हैं, पर ये स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए है. कोई डाउट? मैं बार बार डाउट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नो सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी डाउट को अपना एड्रेस कर लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये कैसे डिवाइड होगा? जैसे रूरल बॉडीज को हमने 2.4 लाख करोड़ दे दिया, पर रूरल बॉडी एक ही तो है नहीं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा रूरल बॉडीज हैं. तो उन रूरल बॉडीज के बीच में कैसे डिवाइड होगा? 90% ऑफ इट विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, 10% ऑफ इट विल बी बेस्ड ऑन एरिया. ठीक है, 90% पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होगा, 10% एरिया के बेसिस पे डिवाइड होगा. पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे डिवाइड हो रहा है कि जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसका उतना ज्यादा ग्रांट, जिसका जितना ज्यादा एरिया उसका उतना ज्यादा ग्रांट. ठीक है. अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में कैसे डिवाइड होगा? अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लेस देन 1 million they will get the grant based on this formula itself, 90% population and 10% area. Greater than 1 million they'll get the grant based on 100% परफॉर्मेंस लिंक. कि मिलियन प्लस चैलेंज करके एक चैलेंज है, उसके अंदर जिसकी जितनी परफॉर्मेंस होगी उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा अर्बन लोकल बॉडीज में. कोई डाउट? बताओ यार. सर प्लीज रिपीट द ग्रेटर देन 1 million. ठीक है, वी हैव सेड कि 2.4 लाख करोड़ इज द ग्रांट गिवन टू रूरल लोकल बॉडीज. अब जैसे हमने स्टेट्स में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन देखा था और कहा था इस बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन हो रहा है, राइट? वैसे ही लोकल बॉडीज के अंदर डेवोल्यूशन कैसे हो रहा है ये 2.4 लाख करोड़ का. दिस इज अ स्प्लिट ऑफ दैट कि लोकल बॉडीज के अंदर रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, दो तरह की लोकल बॉडीज है. इन बोथ ऑफ दीज लोकल बॉडीज 90% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू पॉपुलेशन, 10% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू एरिया. लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज में there will be two separate grants, one will be less than 1 million and one will be greater than 1 million population. ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हुई उसको तो सारा का सारा पैसा इस बेसिस पे मिलेगा, 90% पॉपुलेशन एंड 10% एरिया. जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हुई उसे सारा का सारा पैसा परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा. परफॉर्मेंस किस बेसिस पे? मिलियन प्लस चैलेंज फंड एक परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज है. उस बेसिस पे जिस सिटी की जैसी परफॉर्मेंस रही उसे उतना ज्यादा ग्रांट मिलेगा. ठीक है, कोई डाउट किसी को? बताओ यार. यार नहीं है डाउट तो नहीं बोल दो, है तो है. मिलियन प्लस चैलेंज कांसेप्ट ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है स्पेसिफिक. ये पहले से चल रहा है एज फार एज आई नो. दिस इज बिफोर ओनली एंड 15th फाइनेंस कमीशन हैज सेड that million plus challenge fund through this the cities which have population greater than 1 million they should be allocated the resources. ठीक है, नहीं तो देख लेना, गूगल करोगे तो पता लग जाएगा. दिस इज फैक्चुअल इन नेचर. बढ़े आगे. यस Yes, sir. ठीक है. यस सर. अच्छा आगे बढ़ते हैं. One more thing that urban local bodies के रिस्पेक्ट में फाइनेंस कमीशन ने कही है. It has said that the share of center and state should the share between urban and rural local bodies should change from 67.5:32.5 to 65:35. ठीक है, रूरल का शेयर अभी 67.5 होता है और अर्बन का शेयर 32.5 होता है.
इसकी जगह रूरल का शेयर 65, अर्बन का शेयर 35 हो जाना चाहिए। कोई डाउट आगे जाके? तो ये कैसा हो रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज का शेयर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो दिस यू कैन यूज एज अ पॉइंट टू इन अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को हमारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है और इसी वजह से फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो फंड है उसे बढ़ा दिया है। एनीबडी हैज एनी डाउट? बताओ यार, नो सर। आगे बढ़ते हैं। No, sir. अब क्या क्या क्राइटेरिया है उसके अंदर जिसके बेसिस पे ये पैसा मिलेगा? The center has specified some criteria. If the rural local body or the urban local body does not fulfill that criteria, it will not get that money at all. ठीक है, तो एक तो उन्हें ऑडिटेड अकाउंट अपने प्रेजेंट करने हैं पब्लिक डोमेन में। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को अपने ऑडिटेड अकाउंट दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि 2.4 लाख करोड़ ले लिया और क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन है जैसे भी यूज करें वैसे यूज कर लिया और इवेंचुअली वो पैसे खत्म कर दिया। नहीं, दे हैव टू शो देयर पब्लिश्ड ऑडिटेड अकाउंट। ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट अपने पब्लिश करने हैं। द सेकंड इज मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स रेट को फिक्स करना है और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना है। ये बार बार इकोनॉमिक सर्वे में भी आता रहा है कि property tax is the biggest taxation power which is allotted to the local governments and property tax collection ढंग से हो नहीं रहा है। इस वजह से लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत पुअर है। तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन जब भी क्वेश्चन आता है कोई भी लोकल बॉडी फाइनेंस का, हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करो, वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग करो, ये सब चीजें करो। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है कि एक तो मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स रेट लगाओ कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए ताकि कोई भी जो लोकल अथॉरिटीज है उससे कम ना ले सके। दूसरा, इंप्रूव करो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को। अब इन दोनों बातों के मतलब क्या क्या है? बताओ यार, क्या मतलब है इन बातों के? सर इससे ये एक तो होगा कि मिनिमम जो होगा वो कलेक्ट होगा और एफिशिएंसी हो जाएगी टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, Shrishti has asked me to repeat the last point. So the last point is that center has put these conditions. Without fulfilling these conditions, the urban local bodies or the rural local bodies will not be able to access the funds which are devolved to them. The first condition is they have to publish audited accounts. The second condition is they have to fix minimum property tax rate and have to improve their property tax collection. So property tax is the biggest tax which is available to the local bodies. So center has said firstly the local bodies have to fix minimum tax rate and secondly they have to improve their tax collection, property tax collection. So now my question to you is, why are property tax not collected fairly in country? ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है जो सिविल सर्विस में आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इतना पुअर क्यों है इंडिया में? व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन? बताओ। We do not have proper digital records. We do not have property digital records yet. Very good. So the first issue is ये हो गया issues in property tax collection. First is poor land records. और क्या है इशू? सेकंड, So due to corruption, there is settlement between the authorities and person. corruption. Lavanya has said the third reason is inherent reluctance. So Lavanya, that is very vague in nature. You are correct, you are on the right path, but you have to tell me why is there inherent reluctance. Shrishti has said the loopholes of people to people contact to bypass such taxes. So that is included in corruption point, Shrishti. Lavanya का point ठीक है, inherent reluctance, but why is there inherent reluctance? Property tax लेने में reluctant क्यों है? So because they are not properly evaluating it, there's no proper evaluation. They are saying different, and the person ये तो who's इफेक्ट paying है is saying उसका different. कि रिलक्टेंट है तो ज्यादा प्रॉपरली कर नहीं रहे। मैं रिलक्टेंट हूँ काम करने No, के sir, लिए तो they मैं are अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, Not पर paying. मैं क्यों हूँ They are रिलक्टेंट? not paying because they think it is high.
सर That पर what the टैक्स ही authority is asking. नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई रीजन? सर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टैक्स क्यों लगाएंगे, दैट इज द रीजन। नहीं, द रीजन इज पॉपुलिस्ट प्रेशर, कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स किसी ने बढ़ा दिए, जैसे मान लो एक्स पार्टी आई एंड एक्स पार्टी इंक्रीजेस द प्रॉपर्टी टैक्स रेट टू 30%, then X party will immediately be voted out of power and Y party will come, which will promise we will make the tax rate as 20%. So whenever there is increase in property tax due to the direct nature of local bodies, जैसे state और center are too indirect in nature, ठीक है, तो उस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर urban local body and rural local body are very direct in nature. So due to that, it is very difficult for these authorities to increase tax without facing populist pressure. कोई डाउट? बताओ यार, ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, ये सब अलग से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. As I told you, this lecture will be very useful in other points in your answers also. कोई डाउट है तो बताओ. बोलो बोलो. No, sir. आगे बढ़ते हैं फिर. Then the another requirement of center in state in granting the taxes to local bodies is that the state have to constitute finance commission. State finance commission हर state को constitute करने हैं, and state will have to act upon its recommendation. So what is the current issue? Many states do not constitute their state finance commission regularly. Center finance commission तो create हो जाता है, क्यों? Because there is too much scrutiny upon the center. तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हमेशा क्रिएट हुआ है आज तक, पर कई स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर इतनी स्क्रूटिनी ही नहीं होती है, तो वो अपने फाइनेंस कमीशन ही सेट नहीं करते हैं. स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? So devolution of fund from state to local bodies. Exactly. जैसे there is vertical and horizontal devolution of funds between center and states, वैसे ही there is vertical and horizontal devolution of funds between state and local body. So the 73rd and 74th amendment, they envision a creation of state finance commission to devolve the funds from state to local bodies. तो कई स्टेट इसे कंस्टिट्यूट ही नहीं करते हैं. जब भी आपको क्वेश्चन आएगा स्टेट फाइनेंसेस का, तो ये आपका एक इशू बन जाएगा और आपकी रिकमेंडेशन ये फाइनेंस कमीशन वाली रिकमेंडेशन होगी कि द सेंटर विल स्टॉप फंडिंग द लोकल बॉडीज इफ स्टेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना है अपने आंसर में. ये डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पर जो स्टूडेंट इस पॉइंट को लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. समझ में आया? Yes. ठीक है. आई नो दिस लेक्चर इज समवट टेक्निकल, इसीलिए हम उसे जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हैं उतना ज्यादा देख रहे हैं. एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर एज वेल तो इन द ग्रुप. तो आपको उस ग्रुप से पीडीएफ लेके इसको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपको ध्यान रहेगा और तभी आपको चीजें सेंस बनाएंगी. नहीं तो आप एक हफ्ते बाद भी इसे देखोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि क्या बात हुई थी. एंड देन द रिकमेंडेशंस विल अपीयर टू स्कैटर्ड. तो उसका सेंस बनाने में फिर से बहुत मेहनत लगेगी आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हेल्थ ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ने दिए थे, वो हेल्थ ग्रांट्स क्यों दिए? दिस विल बी यूज्ड इन योर हेल्थ आंसर. सो द फर्स्ट रीजन व्हाई दीज हेल्थ ग्रांट्स हैव बीन गिवन इज कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्जन होगा, इसके लिए हेल्थ ग्रांट्स दिए गए हैं. The second reason is support for diagnostic infrastructure for primary healthcare activities. कि diagnostic infrastructure बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ये हेल्थ ग्रांट्स दिए गए हैं. तो जब भी प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर क्वेश्चन आए, ये चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है. Only through writing these things you will be able to gain more marks in the exam. The third reason why these grants have been given is support for urban health and wellness center, sub center and PHCs, primary health care center. तो इन तीन रीजन से ये ग्रांट्स दिए गए हैं. ये तीनों रीजन अगर आप देखोगे
प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी क्वेश्चन में आप हेल्थ केयर पे क्वेश्चन लिखते हैं, हमेशा उसमें लिखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड। तो कैसे स्ट्रेंथन करना है उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। No, sir. Jenna, is there any doubt? No, sir. Okay, then let's move ahead. The next point is disaster risk management. तो disaster risk management के लिए भी फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी है। Let us look what are those recommendation. So the first recommendation is disaster risk management fund. Disaster risk management fund की कितनी devolution होगी वो फाइनेंस कमीशन बताता है। So for this period, the disaster risk management fund it will have a cost sharing of 90:10 for Northeast and Himalayan states and 75:25 for other states. इन स्टेट्स में 90% पैसा सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में डिजास्टर ज्यादा आते हैं और इन स्टेट की कैपेसिटी कम है खुद से फंड करने की, जबकि अदर स्टेट्स में 75% पैसा सेंटर देगा, 25% पैसा स्टेट देंगे। ठीक है, कोई डाउट? देखो यार, किसी को भी कुछ भी समझ ना आए तो तुरंत पूछ लेना, अगर नहीं पूछोगे तो एंड में आप ही का नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड रिकमेंडेशन इज टू सेट अप अ मिटिगेशन फंड एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो दो चीजें होती है, एक मिटिगेशन और एक अडेप्टेशन। मिटिगेशन और अडेप्टेशन में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? सर टू अवॉइड इट When you know a thing, you have to be as clear as you can. क्योंकि जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तब तो हम अनक्लियर होते ही हैं। जब हम किसी चीज को जानते हैं, अगर हम उसे भी क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा आंसर बहुत कम मार्क्स मिलेंगे हमें। सर मिटिगेशन मींस किसी भी चीज के होने से पहले ही उसके लिए जो सुरक्षा के मेजर्स लिए जाते हैं वो होते हैं, और एडाप्टेशन होता है कि आप उसके बाद में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ले रहे हैं। Very good, Shalini. That's a very good answer. Lavanya has also said that mitigation means to reduce the intensity of risk. तो अभी तक क्या होता था, हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन पे था या फिर हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स पे था। ठीक है, अर्लियर आवर डिजास्टर एफर्ट वाज कंस्ट्रेन्ड टू अडेप्टेशन और रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल क्या क्या है हमारा डिजास्टर एफर्ट, दैट इज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इस टाइप की फोर्सेस है। ठीक है, तो टू सेट अप मिटिगेशन फंड एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स से मिटिगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिजास्टर आएगा उसके बाद हम लोगों को कैसे बचाएंगे, हमें पहले ये देखना है कि डिजास्टर आए ही ना, डिजास्टर को हम किसी तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, एक सेकेंड। Then the next point is separate recovery and reconstruction facility within SDRF and NDRF. State Disaster Response Fund और National Disaster Response Fund के अंदर separate recovery and reconstruction facility होगी। अभी recovery और reconstruction के लिए अलग से पैसा नहीं है। मान लो 10,000 करोड़ रुपए है हमारे, उसमें अपने आप ही कुछ पैसे recovery और reconstruction के लिए अलग से रखे जाएंगे। That is another recommendation. The third is preparedness and capacity building grants for state, कि स्टेट को अलग से प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ग्रांट मिले। दैट इज आल्सो टाइड टू आवर मिटिगेशन फंड। मिटिगेशन फंड में क्या कर रहे हैं हम, डिजास्टर आने से पहले क्या करना है, वैसे ही प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग वाले उसमें क्या कर रहे हैं हम, डिजास्टर आने से पहले क्या करना है हमें। ठीक है, Yes, sir. तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे कभी भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से क्वेश्चन आए या फिर क्वेश्चन आए कि वी आर मूविंग फ्रॉम a responsive approach or a reactive approach to a proactive approach, ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर उसके लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है कि यही पॉइंट्स लिखने हैं हमें कि कैसे हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो रहे हैं। तो रिएक्टिव अप्रोच में क्या होगा कि हम रिस्पॉन्स की बातें करेंगे, हम मिनिमाइजिंग इंजरीज वगैरह की बातें करेंगे, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होगा
हम मिटिगेशन की बातें करेंगे कि डिजास्टर आने से पहले ही हम उसे कैसे मिटिगेट कर लें। हम अलग से प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे, हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। यू हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स। देन द अनदर रिकमेंडेशन इज डेवलपिंग अ डिजास्टर डेटाबेस, कि डिजास्टर्स का डेटाबेस बनाना है हमें, ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन से डिजास्टर आ रहे हैं और वी आर एबल टू मैनेज our resources according to the disasters. We are able to predict the disasters. ठीक है. The next point is alternate source of funding for disaster like reconstruction bonds. Reconstruction bonds जैसे bonds होने चाहिए हमारे, which act as alternate sources of funding. Why? Because with climate change there are too many disasters now. So we have not to rely only on fiscal transfers. ऐसा नहीं कि कभी भी साइक्लोन आया, कभी भी ड्रॉट आया, कुछ भी आया, हर साल सेंटर के ही पैसे जा रहे हैं. Why? Because center also has limited amount of money. So there has to be alternate sources of funding. ठीक है, कोई डाउट? No sir. आगे बढ़ते हैं. All these points you will never, almost never be asked a question कि 15th फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, but you will be asked a question every year. 2 questions will be asked on disaster management. In those questions you have to use these points. ठीक है, that is why this lecture is very important. तो इस रीजन से आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए और समझ में आने चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट द फिस्कल रोड मैप, जब हमने बात करी थी पूरे इस टॉपिक की 15th फाइनेंस कमीशन की, सो वी हैड सेड दैट इट रिकमेंड्स द शेयर ऑफ टैक्सेस. हमने डिस्कस कर लिया कि टैक्सेस का शेयर कैसे रिकमेंड करता है. देन वी हैड सेड दैट इट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स डिटरमाइनिंग द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, ये उसके प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है. ठीक है. पर हमने ये नहीं देखा कि इट इवैल्यूएट्स द स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस चल कैसे रहे हैं, ये उसे डिटरमाइन करता है. तो ये कैसे डिटरमाइन करता है ये देखना है हमें. ठीक है. इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस कैसे करता है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज फिस्कल रोड मैप. आगे के लिए क्या क्या फिस्कल रोड मैप होना चाहिए. सेंटर को इसने क्या कहा है, सेंटर हैज टू रिड्यूस इट्स फिस्कल डेफिसिट टू 4% of GDP by 2025-26. This is very important. ये आपको कहीं पे भी यूज करना आ सकता है, तो इसीलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट हमें 2025-26 तक 4% करना है सेंटर का, और स्टेट का 3% तक करना है 2025-26 तक. टोटल फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, 7% ऑफ GDP. कोई डाउट? बोलो यार. No, sir. No, sir. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बोलो. Was there any doubt? Hello. No sir. No sir. Okay. So let's move ahead. फिस्कल डेफिसिट हमें कितना करना है, सेंटर को फिस्कल डेफिसिट करना है 4%, स्टेट को फिस्कल डेफिसिट करना है 3%. देन द अदर पॉइंट इज एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2025, की 0.5% एक्स्ट्रा बोरोइंग भी अलाउड है कोविड की वजह से, पर वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर है. किसी ने क्वेश्चन पूछा था पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर भी फाइनेंस कमीशन ने कुछ कहा है, तो देख लो भाई ये आ गया यहाँ पे. किसका क्वेश्चन था ये तो बता दो यार. अच्छा. So Harris has said कि it was his question. I hope this point addresses your question. What has Finance Commission said related to power sector reforms? So states will be allowed to borrow 0.5% of their gross state domestic product based on 4 criterions. What are those 4 criterions? The first is decrease in operational losses. The second is decrease in revenue gap. The third is decrease in cash subsidy payment, and the fourth is decrease in tariff subsidy as percentage of revenue. अब एक एक करके मुझे इस चारों चीजों के मतलब बता दो. व्हाट इज ऑपरेशनल लॉस? बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ. ऑपरेशनल लॉस क्या होता है? बोलो. Sir, losses those which are incurred during transition, operation and generation of power. वेरी गुड. अभी कितना है
AT&C लॉसेस, किसी को नंबर पता है क्या, कितना है, कितना होना चाहिए? जैसा मैंने आपको कहा था, देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स विच यू हैव टू नो ऑलवेज। मैं आपको रात को पूछ लूं उठा के कि 4+2 कितना होता है, तो आपको 6 पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो बहुत पहले एडिशन सीखा था, मुझे तो आता नहीं है। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए ताकि आप उसे एग्जाम में लिख सको। तो वैसे ही इंडिया के अंदर द ओवरऑल ट्रांसमिशन लॉसेस और ऑपरेशनल लॉसेस, दे आर टू द एक्सटेंट ऑफ currently around 21%, which is very very high. And what is the OECD average? Developed countries में कितना होना चाहिए? So 6 to 7. एक बार देख लेना, मुझे 12 याद है, ठीक है, अराउंड 12% होना चाहिए। सो 21% से 12% पर लेके आना है हमें। So that is the first issue, कि decrease in operational losses. The second is decrease in revenue gap. What do we mean by revenue gap? बताओ यार, रेवेन्यू गैप क्या होता है? Like revenue deficit only, receipts are less and expenditure more. ये तो सेंटर की बात कर रहे हैं यार। रेवेन्यू गैप हम पावर सब्सिडी के उसमें बोल रहे हैं। Yes sir, I am saying about the company only. तो एक्सपेंडिचर क्या है कंपनी का और उसका रेवेन्यू Sir, क्या है? like the salary and the recurring expenditures, they are more and they are getting less income. You are correct, but technically you should present it differently. The revenue gap is the revenue realized minus the revenue gap is the cost of producing power minus the revenue realized, right? ये better है ना? Yes sir. Cost of power production Yes, sir. minus the revenue generated. अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? So negative. नेगेटिव मतलब अभी रेवेन्यू ज्यादा है। No sir, revenue कम है and उनके cost ज्यादा है। हाँ, तो पॉजिटिव हुआ ना, रेवेन्यू गैप पॉजिटिव हुआ। कॉस्ट ऑफ पावर माइनस रेवेन्यू है, तो कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, कॉस्ट अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव हुआ, राइट? Yes sir, fine. हाँ, फिर कैश सब्सिडी पेमेंट नहीं होनी चाहिए, डीबीटी से होना चाहिए, सबको समझ में आ जाएगा। टैरिफ सब्सिडी को परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू से डिक्रीज करना है, कि अगर 100 रुपए रेवेन्यू है तो उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 रुपए टैरिफ सब्सिडी है। सब्सिडीज को मिनिमाइज करना है और हमें बिल्स को बढ़ाना है। मान लो 50 रुपए की बिजली मैं खरीदता हूँ तो मुझे 50 रुपए में ही बेचना है। ऐसा नहीं कि 50 रुपए की खरीद रहा हूँ तो 20 रुपए में बेच रहा हूँ और 30 रुपए की टैरिफ सब्सिडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंद हो गया क्या? 1 सेकेंड। हाँ, बंद हो गया। Sir, not able to see your screen. You are not able to see the screen? Sir, I can Hello? see. Sir, I think there is a problem in internet at your end, because other people are able to view the screen. So we'll move ahead with the lecture. The next point is revenue mobilization. ठीक है, revenue mobilization के लिए center head said this is a term of reference that efforts made in expansion of tax net. Expansion of tax net के लिए क्या क्या efforts किए गए हैं, उसी में the finance commission has made some recommendations regarding revenue mobilization. What are those recommendations? The first recommendation is to expand the TDS coverage. Tax deducted at source जो है उसकी coverage बढ़ाओ। जितना ज्यादा tax deducted at source होगा उतना ज्यादा revenue होगा। What is tax deducted at source? So the payment is given after deducting the tax. Yes, Like exactly. salary. जब भी कोई चीज समझ ना आए तो बस सीधे सीधे ये देख लो कि क्या उसका लिटरल मीनिंग है। तो जब भी टैक्स काट लेते हैं सोर्स से ही, उसे टैक्स डिडक्टेड सोर्स कहते हैं। जितना ज्यादा टीडीएस होगा उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू होगा ऑब्वियसली।
So the first recommendation is expand TDS coverage. The second recommendation is जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म करना है हमें. प्रॉपर्टी टैक्स कैसे रिफॉर्म करना है? इंटीग्रेट द ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन विद कंप्यूटराइज्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स. ये कंप्यूटराइज्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करो. इसके रिगार्डिंग कोई स्कीम है क्या अभी आई है? जो कोई स्कीम है क्या प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी? Swanidhi, something like that. Grown. Very good. So Swanidhi है या स्वामित्व है? Yes, sir. Swamitva. स्वानिधि तो कुछ और है, स्वामित्व है, राइट? स्वामित्व स्कीम. The scheme name is स्वामित्व स्कीम. जब भी कभी भी लैंड रिकॉर्ड्स पे क्वेश्चन आए आपको स्वामित्व स्कीम मेंशन करनी है, ठीक है? एंड उसकी रिकमेंडेशन मेंशन करनी है 15th फाइनेंस कमीशन की, that we have to integrate transaction registration with computerized property records. The third recommendation is capture market value of properties. अभी क्या होता है कि मान लो मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, मैं बेच रहा हूँ, तो मैं उसका 30 लाख रुपए या जो मिनिमम पॉसिबल है that I'll show in papers that I am selling it for say 30 lakh rupees. Why? Because suppose 10% is the tax rate, then I'll have to pay 3 lakh tax. पर अगर 10% टैक्स रेट मैं पूरी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई, I'll have to pay 30 लाख एज टैक्स. समझ गए? कोई डाउट? हाँ ना, कुछ बोल दो यार. आगे बढ़ते हैं. Then there are some recommendations related to GST. क्या है वो recommendation? The first recommendation is to resolve the inverted duty structure. Yes, is there any doubt? Harish is asking to repeat. Okay. So Shrishti has asked to repeat the last point. So the last point was to capture the market value of properties. So whenever a question is asked on property records or property taxes or land revenue system, one of the major issues is what is the we are not able to capture the correct market value of properties. Say my property is worth 1 crore rupees. So अगर मेरा 10% टैक्स है, my tax which is be deducted is 30 lakh rupees. पर मैं obviously इतना ज्यादा टैक्स 10 lakh rupees, पर obviously मैं इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता. So instead of 1 crore, I show my property is worth 30 lakhs and pay just 3 lakhs worth of taxes. मेरा 7 लाख रुपए बच गया और बाकी के जो 70 लाख मुझे देने थे अपने बायर को, वो सारे के सारे मैं कैश से दे दूंगा. इट क्रिएट्स अ ब्लैक मनी मार्केट. हम कहते हैं ना इकोनॉमी में ब्लैक मनी बहुत है, वो इसी वजह से. समझ में आया? Now are you able to understand this? Yes, sir. Okay, so we'll move ahead. Then recommendations related to GST. The first recommendation is we have to resolve the inverted duty structure. What is inverted duty structure? बताओ यार, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? So the taxes on inputs are higher and on output it's lower. So the company prefer not to produce. So it decreases our production. Yes. So GST में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि रॉ मटेरियल पे जो टैक्स है वो कम है और फिनिश्ड गुड्स पे जो टैक्स है नहीं, फिनिश्ड गुड्स पे जो टैक्स है वो कम है और रॉ मटेरियल पे जो टैक्स है वो ज्यादा है. उससे क्या होगा? सपोज रॉ मटेरियल है सिल्क, यहाँ कर लेते हैं. सपोज रॉ मटेरियल है सिल्क, फिनिश्ड गुड्स है टी शर्ट. सपोज रॉ मटेरियल पे टैक्स है ज्यादा, मान लो 100 रुपए, फिनिश्ड गुड्स पे टैक्स है बहुत कम, मान लो 1 रुपए. सो any company can if it imports raw material, then manufactures and then sells it, its tax will be 100 rupees, right? But if that company imports the t-shirt directly, its tax will be just 1 rupees. So it will reduce the manufacturing in the country. So this point you will get many times, inverted duty structure. So it's important that you understand it. किसी को भी डाउट है तो बताओ.
यार हाँ ना कुछ तो बोल दो। No, sir. Shrishti is asking to repeat once again, so I'll do that. Inverted duty structure refers to a structure in which raw materials are taxed at a higher rate than the finished products. For example, suppose to create a t-shirt, silk is required. So if silk is taxed at a higher rate than the t-shirt itself, it is known as inverted duty structure. Why? What will happen is, suppose a silk factory will require to import silk, then it will pay higher taxes, then manufacture it and then sell it. So it will be uncompetitive. Why? Because if it would have imported the t-shirt directly, then it would have gotten it at less price. समझ में आया? अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करता तो कम पैसे में मिल जाता, तो इससे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस हो रही है। हैरिस का डाउट हम एड्रेस करेंगे 2 मिनट में। सृष्टि आपको समझ में आया क्या? Shrishti has written yes in the chat. So Harris का डाउट है why is it inverted in the first place? यही फाइनेंस कमीशन भी बोल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, कि इन्वर्टेड है ही क्यों, इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। आइडियली द टैक्स सिस्टम शुड नॉट बी इन्वर्टेड, पर जैसे only one thing is not imported in the country, there are 10 lakh things which are imported, तो कई बार बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी बहुत बार इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर आ जाता है और हमको वो हटाना है। ठीक है, कोई डाउट बताओ यार, कोई डाउट हो? Harris has written okay, so I am assuming कि किसी और को कोई डाउट नहीं है। Let us move ahead. वापस से इस लेक्चर में बहुत सारी टेक्निकल चीजें, तो प्लीज किसी को भी कोई डाउट हो तो बता देना। द अदर पॉइंट इज टू मर्ज 12% एंड 18% स्लैब। इससे क्या फायदा होगा? इस रिकमेंडेशन से क्या फायदा होगा टू मर्ज 12% एंड 18% स्लैब? बताओ बताओ। Simplification of structure. Yes, very good. So simplification of structure. And sir, revenue will also increase because it will be merged into 18%. Then the second thing will be it will lead to less litigation. How will it lead to less litigation? बताओ यार, लिटिगेशन कम कैसे होगा? बोलो बोलो। कुछ तो बोलो यार। So there is in chat one. Exactly. Due to less conflict for the tax rate, हाँ, there will be less conflict कि कितना tax rate actual में pay करना है, इस वजह से less litigation होगा। ठीक है, that is the recommendations related to GST. तो GST पे कोई भी क्वेश्चन है आपको ये बोलना है। In fact, if you have been reading newspapers of this week, इस वीक के न्यूज़पेपर में आया भी है कि the government is trying to merge the 12% and 18% slab। ठीक है, तो अगर आपने 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ रखी है तो आपको इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा भी हुआ है। तो इसी वजह से आपको ऐसी रिकमेंडेशंस और 15 फाइनेंस कमीशन बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। देन देयर आर सम रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। ये अलग से ही पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल क्या है, क्यों है, क्या करता है ये, तो कोई बता सकता है क्या है? बोलो यार, नहीं पता तो ये बोल दो ताकि मैं बता दूं। So it keeps a check on government, not so public finances, and reduces extravagance. So currently, what is the phenomenon is that the center gives details of its own fiscal position on its own. सेंटर खुद बताता है कि उसकी फिस्कल पोजीशन कैसी है। सेंटर खुद बताता है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट इतना है, मेरा रेवेन्यू डेफिसिट इतना है,
सेंटर खुद बताता है कि माय सेंटर लेजिस्लेट्स ऑन इट्स ओन डेफिसिट. फॉर एग्जांपल center determines whether its fiscal deficit should be 4%, 5%, 6% or 9%. So this year COVID came, so center itself decided that it has to increase its fiscal deficit. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि सेंटर ही पैसे भी खर्च कर रहा है और सेंटर ही ये डिसाइड भी कर रहा है कि भाई बहुत इमरजेंसी है, मुझे तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे. सो टू रिजॉल्व दिस inconsistency, many entities such as second ARC and now even this 15th Finance Commission have recommended an independent fiscal council. What will that independent fiscal council do? That independent fiscal council will make sure that center adheres to its fiscal limits. Okay? That independent council makes sure that center adheres to fiscal limits. ठीक है? कोई डाउट? No, sir. Then the other point is no off budget borrowing. Off budget borrowing क्या होता है, कोई बताओ? बोलो बोलो. ये पढ़ा है यार, ये तो बजट के लेक्चर में पढ़ा है, ऐसा तो मत करो. So can I? So budget financing is like government does not take a loan directly, but it gives guarantee on loans taken by other banks or anyone. And so this is not shown in the fiscal deficit. What you have said is technically correct, but not the right representation. I had taught you something else if you had attended budget class. तो और क्या बोल सकते हैं इसे? और किसी के पास कोई आंसर? So these are borrowings basically from the in markets, international markets maybe, and they are not shown into our annual financial statement, that is budget, so that it does not account for the fiscal deficit of the center. Exactly. These are borrowings by entities such as FCI. तो क्या होता है कि बोरो करना है तो या तो सेंटर खुद बोरो कर सकता है या सेंटर अपनी PSUs को कह सकता है, जैसे ONGC बोरो कर ले तो ONGC बोरो करके पैसा सेंटर को ही दे रही है, but that will be debt of ONGC and not debt of center. So through this way center indulges in creative accounting to decrease its fiscal deficit. एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो FCI के पास भी बहुत सारा डेट है और FCI का डेट इवेंचुअली सेंटर ही पे करता है, पर क्योंकि वो FCI का डेट है तो वो सेंटर के फिस्कल डेफिसिट में नहीं आता, तो इसीलिए एक तरह से हमारा जो फिस्कल क्राइटेरिया है वो बाईपास हो जाता है. तो बार बार बहुत सारी एजेंसीज ने ये कहा है कि सेंटर नीड्स टू एलिमिनेट द ऑफ बजट बोरोइंग. ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ. हाँ, सेंटर नीड्स टू एलिमिनेट द ऑफ बजट बोरोइंग. ठीक है. The third recommendation is there has to be more avenues for state borrowing. इस बात का क्या मतलब है और कौन से avenues हो सकते हैं स्टेट बोरोइंग्स के लिए? बताओ. So states are not generally allowed to borrow from foreign lenders. So this can be one. तो स्टेट को जैसे फॉरेन बोरोइंग वन हो गया, सेकंड हो गया स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट बॉन्ड्स हो गए, जैसे मसाला बॉन्ड्स वगैरह है वैसे ही अलग बॉन्ड हो गए या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गए. उस तरीके से देयर शुड बी मोर एवेन्यूज फॉर स्टेट टू एक्सेस मार्केट बोरोइंग, स्टेट टू स्टेट लेंडिंग. यस, तो उस तरीके से देयर हैज टू बी मोर एवेन्यूज फॉर स्टेट बोरोइंग. क्यों? क्योंकि करंट एवेन्यूज या तो बहुत महंगी है या स्टेट इंडिपेंडेंटली बोरो नहीं कर पाता है. द फोर्थ रिकमेंडेशन इज इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट सेल इन स्टेट्स. व्हाई? क्योंकि स्टेट की डेट मैनेजमेंट बहुत पुअर है, या तो डेट पे बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है या बहुत ज्यादा डेट है. तो इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट सेल क्या करेगा, जैसे इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल है सेंटर पे, वैसे ही इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट सेल बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी लाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल कैपेबिलिटी लाएगा ताकि स्टेट अपना डेट अच्छे से मैनेज कर सके. ठीक है. फिर देयर आर सम अदर रिकमेंडेशंस एज वेल, we'll study them as well. Other recommendations, the first one is on health. Health पर क्या recommendation है कि state have to increase their spending above 8%. तो state spending
has to be above 8% by 2022. Second recommendation is primary healthcare spending has to be above 2/3 of the total spending. ये रिकमेंडेशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेंडिंग की जो स्पेंडिंग है वो टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग की 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल स्पेंडिंग. The third spending is Indian medical and health service should be established. तो जैसे एक और सर्विस आ जानी चाहिए, वैसे भी वैकेंसीज बहुत कम हो रही है, तो इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस शुड बी एस्टेब्लिश्ड. ये सब पॉइंट्स आप सीधे डायरेक्टली हेल्थ के किसी भी क्वेश्चन में लिख देंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिफेंस. जो हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला था कि एक सेपरेट डिफेंस फंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड, डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए, known as modernization fund for defense and internal security. Modernization fund for defense and internal security. ठीक है. इसमें कहां से पैसा आएगा? फर्स्ट इज डायरेक्ट डेवोल्यूशन, सेकेंड इज मोनेटाइजेशन ऑफ डिफेंस लैंड्स, and the third is the disinvestment of defense PSUs. ठीक है. The next point is centrally sponsored schemes. तो एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सनसेट क्लॉज आना चाहिए और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आना चाहिए. इन दोनों बातों का क्या मतलब है? सनसेट क्लॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सनसेट क्लॉज का मतलब हम गेस कर चुके हैं. मिनिमम थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है कि एवरी ईयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स get some money, and if they are not able to utilize that money, then the money for subsequent year is decreased. तो मान लो कोई स्कीम ऐसी है जिसकी यूटिलिटी कम होती चली जा रही है, तो जब उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए. मान लो 100 करोड़ हो गया, तो पूरे इंडिया में अगर 100 करोड़ की ही स्कीम है तो वो इतनी यूजलेस स्कीम हो चुकी है कि उसको और बढ़ाने का कोई पॉइंट ही नहीं है. देन दैट स्कीम शुड बी स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर. ठीक है. ये मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का. कोई डाउट किसी को इस पूरे उसमें? नो सर. लास्ट के 3 पॉइंट्स हमने जल्दी जल्दी कवर किए. हेल्थ, डिफेंस एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, क्योंकि मैं साथ साथ में लिख भी रहा था इनको. तो इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? ये पॉइंट्स आई थिंक बहुत ही इजी है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे. ये आपको लिखने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स. जब भी डिफेंस पे क्वेश्चन आएगा आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं. Somebody has asked me to describe, Harris has asked me to describe sunset clause once again. Can anybody describe sunset clause once again for me? So can I? Yes. So like while launching a scheme, the government will in beginning only put a criteria, put a period for how long the scheme will be functioning, and the scheme will automatically stop after that period. Yes. समझ में आया आपको हैरिस? Were you able to understand? Harris has written no, so I'll explain it for him. What a sunset clause means is, जैसे सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है हमेशा, और सनसेट हमें पहले से पता होता है कि किस टाइम पे होगा. उसी तरीके से हर स्कीम में the government has said, and even the 15th Finance Commission has said
that there should be sunset clause. For example, अभी there are actually thousands of schemes which are running जिनका आप कोई मतलब नहीं रह गया है, पर अगर उन्हें रोकेंगे there will be populist pressure कि भाई उन्हें खत्म क्यों कर रहे हो, या फिर वो ऐसे ही चले जा रही है. This leads to wastage of funds. This leads to leakage of funds. तो क्या है कि हर स्कीम के साथ सनसेट क्लॉज जुड़ा होगा. फॉर एग्जांपल मान लो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ये किस पर्पस के लिए है? DDU-GJY क्यों है ये स्कीम? कोई आइडिया बता दो यार, ग्राम ज्योति योजना से क्या लग रहा है? वैसे ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स. इलेक्ट्रिफिकेशन. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज के लिए है. मान लो ये स्कीम हमने चलाई तो इसके अंदर साथ ही में सनसेट क्लॉज भी होगा कि 2020 तक ये स्कीम खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एक बार सारे हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो फिर स्कीम का मतलब नहीं है ना. तो फालतू में यह स्कीम हर साल चलती रहे, हर साल इसमें से पैसे जाते रहे, किसी को पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं. तो इस वजह से सनसेट क्लॉज इट स्पेसिफाइज द एंड डेट ऑफ द स्कीम. ठीक है, तो हर स्कीम में सनसेट क्लॉज होना चाहिए ताकि स्कीम्स परपेचुअल ना हो नेचर में. दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. किसी को कोई डाउट? बता दो यार. Harris has written that it's clear. So this culminates our discussion on the finance commission. फाइनेंस कमीशन पे हमारी इतनी ही डिस्कशन है और हमने सारी उसकी रिकमेंडेशंस कवर कर ली है. अब ओवरऑल किसी को कोई डाउट इन जनरल, प्रीलिम्स, मेंस से रिलेटेड, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड? बोलो बोलो. कैसी वो बटरफ्लाई? Your voice is not clear. No sir, no doubt. Okay, so with that we'll culminate this week's lecture. अब हम अगर करप्शन का टॉपिक कवर करेंगे तो आई थिंक पीपल वोंट हैव द स्टेमिना, क्योंकि मोस्टली वो टॉपिक आप ही को कवर करना है. मैं बस आपको एनेबल करूंगा उसमें एंड will not be able to do it justice. So we'll carry it forward to the next week. What is the expectation from you in the next week is finance commission se related. We'll ask a question, so you all have to answer it. You all have to revise what we have studied, and as always you all have to read newspaper. You all have to gather your doubts and you have to ask them before the class, during the class, or after the class. So what is your what are your tasks? The first is to read newspaper. The second is to revise notes. And the third is to answer the questions on the group. देखो आंसर राइटिंग के बिना, आंसर राइटिंग plays as strong a role as the content, and this lecture we strive to give you both the content and how to write the answers. पर वो आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप खुद लिखोगे. ठीक है, तो इसके लिए एक ड्रॉ प्रोग्राम भी है. जिसको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करनी है वो उसके लिए कंसल्ट कर सकता है, और जिसको करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आंसर राइटिंग लिखनी है रोज, तो वो ग्रुप पे लिख सकता है. बट यू हैव टू राइट आंसर्स वन वे और द अदर. ठीक है, टू सो एंश्योर दैट यू डू दैट. किसी को कोई डाउट प्रीलिम्स, मेंस, इससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, कोई जनरल डाउट? I think not. So we'll culminate the lecture now. Thank you everyone. I'll be ending the class. Thank you. Thank you. Thank you, sir.